Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to this Friday evening edition of Market Mantra, the program that gives you a complete roundup of all that's happening in the world of business, economics, and the stock markets. I am S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपिका सिकरवार। दीपिका, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्र जी। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइन से बात रंगा। Thank you, Amit. The top stories. PM addresses G20 agriculture ministers meet. Says India's G20 priorities in agriculture focus on one earth, one family and one future. Sensex gains 467 points to close above 63,300 level, while Nifty settles above 18,800 mark. And US stocks jump over 1% on upbeat economic data. आर्थिक सुर्खियों में प्रधानमंत्री ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि G20 कृषि क्षेत्र का ध्यान एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य पर होना चाहिए। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 467 अंक की बढ़त से 63,300 और निफ्टी 18,800 के पार दर्ज हुआ और अमेरिका में बेहतर आर्थिक आंकड़ों से अमेरिकी शेयर बाजार में 1% से अधिक की तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि वैश्विक तौर पर लगभग 2.5 अरब लोगों को आजीविका प्रदान करता है और साथ ही जीडीपी में लगभग 30% की हिस्सेदारी भी देता है। विश्व के दक्षिणी हिस्से में लगभग 60% लोग कृषि कार्यों में ही लगे हैं। प्रधानमंत्री G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों के बजाय हमें प्राकृतिक तौर पर धरती को जीवंत बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बरकरार रखते हुए गैर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से हर बूंद पानी से अधिक फसल लेने के उपाय भी करने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के अंत में कहा कि G20 की प्रतिबद्धता कृषि क्षेत्र के लिए एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य पर होना चाहिए। दीपिका, किस तरह से देखते हैं कृषि क्षेत्र में अगर तकरीबन 30% की जीडीपी में हिस्सेदारी है तो कहीं न कहीं आर्थिक हित तो बहुत बड़े तौर पर जुड़े हुए हैं, और अगर प्रधानमंत्री की इसी बात पे हम ध्यान दें कि एक धरती, एक परिवार और एक भविष्य, अगर इसमें इस तरीके से हम ध्यान दें तो कितना सुधार और कितना इसका शोधन किया जा सकता है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री का अगर आप संदेश देखें जो विश्व को वो G20 प्रेसिडेंसी भारत की जो है उसके तहत जो वो कहना चाह रहे हैं कि अब हमें विश्व को एक ऐसा सोल्यूशन देना है कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र जो इतने ज्यादा लोगों को रोजगार देता है और उसके अलावा खाद्य की निर्भरता है कृषि क्षेत्र के ऊपर जो लोगों का पेट भरता है, उस क्षेत्र में अब हमें नई तकनीक और उनके लिए नए सॉल्यूशंस जो हैं उनके ऊपर विचार करना होगा। और भारत की ये कोशिश है कि ये G20 जो प्रेसिडेंसी है उसमें कुछ इस तरह के डिलिवरेबल्स जो है ये G20 प्रेसिडेंसी दे पाए विश्व को, जो आगे विश्व में लोगों की लाइफ, लोगों की जिंदगी जो है उसमें कुछ असर आए, ग्राउंड लेवल पे उसमें कोई असर आ पाए। Deepika, whatever the Prime Minister is exhorting the entire world to do, that actually India has already done, especially in the last 8-9 years, and the Prime Minister and the current government has targeted every sub-segment of agriculture, whether it is irrigation, whether it is soil health, seeds, fertilizers like with nano urea and all these initiatives. So each of the segments have been addressed, and he's saying the same thing especially to the global south, that for others also they need to emulate. Absolutely, Rangabhasham. The template that India has right now in terms of policy interventions, we have taken specific policy interventions like you mentioned. Soil health was a huge concern.
soil health card scheme was launched. We've tried to move towards organic, fertilizer, organic farming, and that is being specially supported. We are now trying to, raise farmers' income. The initiative is separately going. So how can farmers who, a large population is dependent on agriculture in India, not just in India but world over, but in India particularly. So how can we enhance their income? So various schemes have been launched, various measures have been undertaken, and this template is available for other countries, especially, the global south, as the Prime Minister is talking about, to adopt and emulate. And India is offering all its technologies, all its, template for the policy interventions, the kind of results that they have produced, the knowledge base to share with the global south. Yeah, and this is not only for our country. We are fortunately self-sufficient as far as food grains are concerned, whether it is, the staples like rice and wheat. And now this year we are actually celebrating it as the year of millets. So we are also focusing on coarse food grains. But it is related to the food security of the entire world, entire earth, isn't it? Definitely. I mean, what we are trying to do here is, and especially he emphasized, per drop more crop. So the focus is on productivity. See, as urbanization happens, the land availability for farming is going to come down, and this is not just India, it's going to happen the world over. So the focus is, how do you enhance productivity from the same size of the land? You have to use new technology, you have to use various different kind of fertilizers, you have to use different kind of food. And it is more to do with intensive agriculture, because the acreage won't increase. Actually, it would be shrinking. So you have to bring in new techniques, and a lot of work is happening already. We already have various kind of agreements with different countries. We have agreement with Israel, for example, where they are teaching us irrigation and different kind of farming for tomatoes and other crops. How can you actually enhance the productivity? So all these interventions are happening on the ground, and they've shown results, and all these technologies, all these interventions are available for the world to see. नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.7% की बढ़त से 467 अंक उछलकर 63,385 के स्तर पर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों के मजबूत संकेतों से घरेलू बाजारों में उत्साह रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% की बढ़त से 138 अंक बढ़कर 18,826 के स्तर पर दर्ज हुआ। बीएसए मिड कैप सूचकांक में 0.7% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। Well, as Amit just mentioned, it was a wonderful day at Dalal Street. Key domestic indices today closed with gains of more than 0.5% amid positive cues from the global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above 63,350 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange also settled above the 18,800 level. The Sensex advanced 467 points or 0.74% to finish at 63,385. The Nifty added 138 points or 0.74% to close at 18,826. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.71%, while the small cap added 0.76%. In the Sensex pack, out of the 30 companies, shares of 26 companies appreciated, while the remaining 4 depreciated. Bajaj Finserv was the top gainer as it climbed 2.2%. Titan rose 1.7%. Kotak and HDFC banks both added 1.3% each. On the other hand, Wipro declined 1.9% and TCS fell 1.3%. Power Grid and Tech Mahindra both lost 0.3% each. In sectoral indices, 16 sectors logged gains while 4 witnessed losses. The Financial Services Index surged 1.2%. Bankex and Capital Goods both advanced 1.1% each. On the other hand, IT sector declined 0.2%. Oil and gas, tech and realty fell 0.1% each.
The overall market breadth was positive as shares of 2,126 companies advanced, while that of 1,403 companies declined. A total of 127 shares, however, remained unchanged. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 25 पैसे की मजबूती से 81.94 प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। डॉलर इंडेक्स कारोबार के दौरान 102.2 के स्तर पर दर्ज हुआ। दीपिका, अगर शेयर बाजार की खासतौर पे बात करें तो 63,300 के स्तर को पार करना कितना उत्साह जगाता है और कितना भरोसा जगाता है कंपनी जगत के नतीजों पे, क्योंकि हम पहली तिमाही कुछ ही दिनों में पूरी कर लेंगे और उसके बाद जो कंपनी जगत के नतीजे हैं, क्या इस आंकड़ों से हम ये माने कि कंपनी जगत के नतीजे कुछ बेहतर और बहुत अच्छे नतीजे देने वाले हैं, जिसकी वजह से पूरा बाजार आशान्वित है? क्योंकि 63,000 का स्तर कहीं न कहीं तो भरोसा तो जरूर जगाता है अर्थव्यवस्था में मजबूती के प्रति। बिल्कुल अमित जी, और आज का अगर हम जो उछाल देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल अनसर्टनिटी थी जो हमारे बाजार पर बहुत समय से वे इन कर रही थी, आज वो जो अनसर्टनिटी वो थोड़ी फेड के डिसीजन के बाद, ईसीबी के डिसीजन के बाद और जिस तरह की कमेंट्री आई, जिस तरह का डेटा आया, उससे वो अनसर्टनिटी घटती हुई दिख रही है। और हालांकि जो भारत में फंडामेंटल्स थे अर्थव्यवस्था के, वो तो बहुत उत्साहजनक लग रहे थे। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स भी देखें, जिस तरह के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल सेल्स, उसके थोड़ा मॉडरेशन आया है, लेकिन अभी भी जो आंकड़े हैं बहुत ही रोबस्ट हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तो बाजार का विश्वास था और हम वो देख रहे थे, लेकिन अब ये जो अनसर्टनिटी विश्व के तौर पर हटती हुई दिख रही है, तो उससे बाजार में ये उत्साह आज हमें देखने को मिला। अनसर्टेनिटी जिस तरह से आपने भी बात करी, तो क्या ये माना जाए कि जो रूस यूक्रेन वाला युद्ध था, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी, जो हमेशा से टेंस बनी हुई थी, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसिंग में भी बहुत ज्यादा दबाव था और बहुत सारी चीजें इन युद्ध की वजह से प्रभावित थी, कहीं ना कहीं बाजार अब इससे आगे बढ़ के देखने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, बाजार जो है रूस यूक्रेन का ये युद्ध था, उससे एक बहुत ही बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई थी ओवरऑल सेंटिमेंट में। और उस युद्ध के तहत हमने देखा था कि जो इनपुट कॉस्ट थे, जो कमोडिटीज थे, कमोडिटीज का जो बाजार था, सबके दाम जो है बहुत बढ़ने लगे थे। उसका असर अर्थव्यवस्था पे आ रहा था। वो अब रूस और यूक्रेन का युद्ध हालांकि खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब मार्केट्स ने ऐसा लगता है कि उसे डिस्काउंट कर दिया है। जो बाकी अनसर्टेनिटीज उस युद्ध की वजह से पैदा हुई थी, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में या यूरोपीय अर्थव्यवस्था, उसमें थोड़ा सा लग रहा है कि क्लैरिटी लग रही है कि कहां जा रही है, दिशा क्या ले रही है। तो अब वो लग रहा है कि ठीक है, बाजार उससे उबर गया है। Yeah, and Deepshika, to talk about the markets, it seems to be a very secular trend, not only the indices, Sensex and Nifty, but also the mid cap, small cap. The entire market seems to be in one direction. But if we were to, take a look at the macroeconomic fundamentals, if we were to talk about inflation is, coming down steadily. We have seen, WPI in the negative terrain. CPI has come down from less than 5% to less than 5%. The forex scenario, the forex reserves fairly good, close to $600 billion. The rupee-dollar equation is fairly stable, in the last many months, in that range of 82 rupees to $1. Oil prices have come down a lot, from $85 per barrel to less than $75. So all in all, at least the domestic and even the international scenario seems to be really rosy. The GDP is doing well, growing by leaps and bounds. So don't you think all these are kind of putting an impact on the market and having a strong undercurrent of positive sentiment? Definitely, and like a lot of organizations for the past, we've seen over 2 years, they've said, they've seen India as a bright spot, and because of the fundamentals of the economy, because of the indicators that were coming out, and that seems to be like really holding out, because our fundamentals and our overall macroeconomic situation really looks good if we see, and if you compare it with other economies at this juncture. Our key risk
to our growth and to inflation was crude, and which has begun to slide. So definitely that is a huge factor which is, impacting the sentiments in the market. Plus now there is more clarity on inflation, even it's begun to slide. So the markets, this overall, the sentiment is that, and now with the Fed also signaling, the overall sentiment which is building up it is that we may be done with rate hikes now. It may be, just pause. Yes. So, and especially when other economic indicators are doing well, the high frequency indicators are showing that the economy is, doing very well. It has not really slowed down as was feared. So the markets are factoring in all these things. So going forward, 6 months down the line, definitely it looks really, a path where it go northwards. Yeah, really rosy. Deepshika, you spoke about the Federal Reserve. Let's also talk about our domestic, RBI. The monetary policy, they took a conscious decision, to keep it on hold, to keep it steady, no hikes as such. What do you feel? And just a couple of days back, the governor also said that, this is going to be a long drawn thing. So don't expect he was giving a signal that don't expect a quick fix solution, that inflation would come down in a significant manner. So that probably is a signal that interest rates are kind of, stable and probably have hit the ceiling now. Definitely, and I think the governor made it very clear that, okay, see it as a pause. Don't see that, we've begun the process to sort of cut down. The language was also very balanced in terms of the message was very loud and clear. The key focus of the Reserve Bank, of the MPC, will be to bring inflation within the band. It's almost begun to come there. So things are falling in place, and markets definitely building on that Reserve Bank will not really increase rates now. This pause is going to last for long, and soon, maybe from December onwards, maybe the central bank may start to look at a cut. So the overall sentiment remains very positive and, robust about the fundamentals of the economy and the overall policy going forward. ऐसे दौर में दीपिका, जैसे आपने बताया कि रिजर्व बैंक का फोकस इस बात पर है कि कहीं ना कहीं हमें मुद्रास्फीति यानी महंगाई दर पे ज्यादा ध्यान देना है, तो कहीं ऐसा नहीं माना जा सकता कि इसकी वजह से जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नजर आती है। शायद इस दौर में हमें उसकी तेजी पर भी और ज्यादा ध्यान देने के लिए शायद ब्याज दरों को यथावत बनाए रखने के साथ साथ शायद कुछ उसमें कुछ कदम उठाए जाने सकने थे, या उद्योग जगत की इस तरह की कितनी डिमांड थी या उम्मीदें थी। क्या हम सिर्फ ये मान लें कि हमारी चूंकि महंगाई दर काबू में है और रॉ मटेरियल्स के प्राइस भी जो हैं वो काबू में है, तो अपने आप हम उस ग्रोथ को हासिल कर लेंगे? देखिए, रिजर्व बैंक जो है इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। रिजर्व बैंक का प्रायोरिटी जो है और मेन फोकस जो है वो मुद्रास्फीति को कम करना है। जो टारगेट रिजर्व बैंक को दिया गया है, जब तक वो टारगेट नहीं मिल जाता, उद्योग जगत जो है उसकी आशाएं हैं कि, और वो आशाएं थी भी, उन्हें बहुत ये एक एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो रहा था उनकी तरफ से, इस तरह के इंडिकेशंस भी आ रहे थे कि हाँ अब शायद वो प्रोसेस जो है घटाने की वो शुरू होनी चाहिए। लेकिन अभी देखिए ये डेटा जो है, जो मुद्रास्फीति का अगर आप देखें तो अभी कम होना शुरू हुआ है। कोर इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है रिजर्व बैंक को। तो रिजर्व बैंक जो है, जो काटने की प्रक्रिया है, उसको पूरे जब विश्वास हो जाएगा कि ये जो गिरावट आ रही है मुद्रास्फीति की दर में, ये बहुत ही लास्टिंग रहेगी, उसके बाद ही वो शुरू करेगा, बीच में नहीं करेगा। और आप देखिए कि मॉनसून को लेकर के थोड़ी अभी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, तो अगर मॉनसून अनसर्टन होता है तो उसका असर भी प्राइसेस पर पड़ेगा। वो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी है और उसी के मद्देनजर आरबीआई ने पॉज जो है उसको रखा है। अगर हाउसिंग यानी रियल्टी क्षेत्र को देखें और ऑटो क्षेत्र को देखें, ये बहुत दबाव में थे और बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे थे। इस क्षेत्र की खासतौर पर ऐसे था कि कहीं ना कहीं अगर यहां पे मांग बढ़ती
अगर ब्याज दरों में एक संभावित उम्मीद थी कि अगर यहाँ पे ब्याज दरों में कुछ कटौती की जाती तो यहाँ से जरूर मांग बढ़ती, जिससे कि रोजगार सृजन होता। इसमें बैलेंस करने में रिजर्व बैंक कितना सफल हो पाया है आपकी दृष्टि में? अमित जी, अगर आप आंकड़े देखें पैसेंजर व्हीकल सेल्स के जो हर महीने आते हैं, वो आंकड़े जो हैं वो क्लियरली ये दर्शा रहे हैं कि कंज्यूमर डिमांड जो है बहुत स्ट्रांग है। अगर थोड़ा सा मॉडरेशन भी हुआ है पिछले महीने, वो मॉडरेशन भी बहुत ही मार्जिनल है। उस सब के बावजूद आंकड़े इतने मजबूत आ रहे हैं और ये ब्याज दरों के मतलब 2.5% ब्याज दर बढ़ने के बाद ये आंकड़े बने हुए हैं। दूसरा, रियल एस्टेट सेक्टर की आपने बात की। रियल एस्टेट सेक्टर में भी सुनने में यही आ रहा है कि अब डिमांड जो है वो पिकअप हो रही है धीमे धीमे। कुछ सेक्टर्स जो हैं, कुछ सिटीज जो हैं, वहां पे उठने लगी है। तो ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा जो है इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आया है। हाँ, इम्पैक्ट मुद्रास्फीति की दर पे जरूर पड़ा है। तो ऐसी आशा की जाती है अगर यही ट्रेंड रहे तो जरूर उनको राहत मिल सकती है कुछ महीनों में। But Deepshika, let's talk about the flip side also. As you said, monsoon probably is one cause of concern. Till now, we have just been able to see some 50% of whatever rainfall was due, and although the predictions were really good, 97% of the LPA, the long period average, but the distribution and the timeliness of the rainfall also matters, isn't it? Otherwise it can have an impact on the agricultural production with a cascading impact on, say, sectors like FMCG and two-wheelers. Absolutely, that is a key concern, and we saw stock limits coming on wheat, this week. Also pulses. So, I think there is a concern building up around it, and hopefully, monsoon picks up pace and its distribution goes well. But it is definitely a concern which is now playing on the minds of policymakers. नजर डाल देते हैं शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर तेजी का दौर रहा है। जापान का निक्केई 0.6%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6%, हांगकांग का हैंगसेंग 1%, सिंगापुर का स्टेट सैंग सूचकांक 0.5% और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% की बढ़त से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में जर्मनी, लंदन और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.2% से 0.7% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Let's go across the Atlantic to the American markets. Stocks on Wall Street closed all in the green as US stocks jumped over 1% on upbeat economic data. Dow Jones on Thursday rallied more than 400 points and S&P 500 touched a fresh 13-month high as investors bet the Federal Reserve was close to having done raising rates after the central bank this week skipped a hike. S&P 500 climbed 1.23%, Dow Jones Industrial Average rose 1.27% and Nasdaq Composite gained 1.15%. Deepshika, very brief comment on the US scenario. Everything again, for the US also seems to be really good and the sentiment seems to be positive. Yes, and the US Fed decision on pause has helped the market, helped the overall sentiment, not just in the US but globally definitely. But also the data that came out, the retail sales, also the jobless claims. So the entire data was giving something, it was just balanced out too well. So it's giving some kind of confidence to investors and to the markets that maybe going forward, though Fed is talking about an increase, it may not come about. Yeah. And Deepshika, I'm sure you'll agree that, just a couple of days back, we were all talking about the debt ceiling issue of the US, and there were apprehensions that, US could actually go ahead and make a default, and that would have a big cascading impact on the entire world. Thankfully, from there on, Yes, I think that was largely political brinkmanship which was going about, and it was expected to be resolved, but yeah, it did create a bit of nervousness in the markets. Yeah, but things doesn't seem to be good as far as the European region is concerned. Say specifically Germany is reeling under recession. So do you think that in times to come it could kind of spread as a contagion maybe in the European region and impact other countries as well? Europe definitely, there are concerns, and we've seen ECB further raised rates. So, and now the interest rates
of ECB is like at a 22-year high. So definitely, such rates which the economy is not used to for decades, it is having some kind of an impact. The idea was to slow the economy, but it is, in some cases, it is having a very drastic impact on the ground. So we'll have to see. ECB is very clear till it actually reins in inflation, it is not going to stop. So unless the indicators showed some reining in, it would continue. So probably, there are concerns about recession spreading, especially in the Europe. That's right. Well, let's move on and take a look at the energy scenario as well. Crude oil prices slipped on Friday as a weaker economic outlook and the prospect of further interest rate hikes dogged sentiment, outweighing a tighter market in the second half of the year owing to higher Chinese demand and an OPEC plus supply cut. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.22 per barrel, whereas the West Texas Intermediate, or that is the WTI crude, was at $70.13 per barrel when reports last came in. To talk about the crude oil prices, it seems as if the Russia-Ukraine war has stopped kind of impacting the prices. Now other factors are there, maybe OPEC and OPEC plus trying to do what a cartel always does. They are thinking of cutting down on production in order to prop up the prices. But all in all, there seems to be some kind of stability in international crude oil prices. Yeah, if you actually see the OPEC Plus's decision to cut supplies has not really made much of a difference on the prices, because the concerns with regard to economy have overweighed against this decision. So while OPEC obviously wants some kind of, they would want some improvement in the prices, but definitely until the demand comes back, if the Europe is going into recession and if the US economy is still sort of their concerns remain, oil definitely it looks unlikely that there'll be a sharp spike, but definitely for India, it's a huge silver lining. Yeah, but let me put this question on behalf of our listeners as well, the consumers. Now that the prices have fallen substantially, can we, as domestic consumers, start expecting a cut in diesel and petrol prices? Well, I think the oil companies here still want to recoup, the kind of support, whatever they had provided when the prices were high during the hard times. So they're trying to sort of recover that. So probably it'll take some time. कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो जैसा कि रंगा ने कहा कि कम से कम पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में थोड़ी राहत जल्दी मिले। नजर डाल लेते हैं सराफा बाजार में। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 120 रुपए की बढ़त से 59,475 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 382 रुपए की बढ़त से 72,500 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त से $1,976 प्रति ऑunce के स्तर पर रहा, जबकि चांदी मजबूती से $24.09 प्रति ऑunce के स्तर पर दर्ज हुई। बहुत संक्षेप में दीपिका, $2,000 के आसपास अगर सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और चांदी तकरीबन $24 के ऊपर पहुंच गई है, लेकिन इसके बनिस्बत जो भारतीय बाजार हैं उसमें सोने और चांदी की कीमतों में कहीं ज्यादा मजबूती देखी जा रही है। कोई खास वजह? देखिए, भारत जो है वो भारत और खासतौर से भारत में जो प्राइसेस हैं वो भारत के ही बाजार से बहुत हद तक इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हालांकि प्राइसेस बढ़े लेकिन डिमांड पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। और अभी कुछ समय मॉनसून रहेगा, लल रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएगा, फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बाइंग शुरू हो जाएगी। तो प्राइसेस जो है उतना ज्यादा उनमें करेक्शन आएगा या कुछ ऐसा सोने की चमक बरकरार रहेगी। सोने की चमक बरकरार रहेगी। दीपिका, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Prime Minister addresses G20 Agriculture Ministers meet, says India's G20 priorities in agriculture focuses on one earth, one family and one future. Sensex gains 467 points to close above 63,300 level, while Nifty settles above 18,800 mark. And US stocks jump over 1% on upbeat economic data. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. From the entire team, thank you so much for joining us. Goodbye.
मौज मस्ती